फिल्म बनाना मेरा पैशन है, बट एज ए प्रोड्यूसर यू डोंट हैव मच फ्रीडम। कभी कोई बड़ा शहर मतलब या तो कलकत्ता या पटना, एंड सीता मैया ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी फ्रॉम आवर माइथोलॉजी, एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ इरानियन सिनेमा, लॉट ऑफ फ्रेंच सिनेमा। आई एम इंटरेस्टेड टू डू ए बंगाली फिल्म। मुझे ऐसा लगा कि ये एक टेम्पररी फेज है। व्हाट वी आर शोइंग इन हिंदी फिल्म इज नॉट दैट क्लास। सिनेमा इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। मुझे साला शब्द भी नहीं बोलना है। इट वाज रिटन बाय मी, प्रोड्यूस्ड बाय मी, डायरेक्टेड बाय मी। আজকে আমরা পেয়ে গেছি মনীষ মুন্দ্রাকে। মনীষ মুন্দ্রা নামটার সঙ্গে আপনারা সবাই পরিচিত। তাকে এতদিন আমরা দেখেছি প্রযোজকের চেয়ারে, আজকে সরাসরি আমরা তাকে পেয়েছি পরিচালক হিসেবে, এবং এমন একটি ছবি তিনি বানিয়েছেন যে ছবিটা নিয়ে আমি খুব নিশ্চিত যে আগামী অনেক দিন ধরে দর্শকরা আলোচনা করবেন, আপনারাও করবেন। আমরা সরাসরি কথা বলে নিই মনীষের সাথে। मनीष, वेलकम टू कोलकाता। थैंक यू सो मच। आज हम बोल ही देते हैं कि इस टाइम में हम आपसे बात कर रहे हैं, इससे पहले हम आपका पिक्चर देखे हैं। इट्स अ रियली अ वेरी गुड मूवी। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि ये जो आपका पहला फिल्म है, पहला फिल्म में ज़्यादातर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि सेफ साइड में जाने का, ऐसा कुछ फिल्म नहीं बनाते हो जिसमें एक लोग कितने देखेंगे या नहीं देखेंगे ये बात रहता है। तो ये आपने ऐसा ही एक मुद्दा चूज़ किया है जो कॉमर्शियली वायबल होना बहुत मुश्किल है। पहले फिल्म के लिए इस टाइप का फिल्म आपने क्यों चुना? एक फिल्म बनाना मेरा पैशन है। इट्स माई पैशन टू मेक फिल्म्स, इट्स नॉट माई बिजनेस। आई मेक फिल्म्स बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट मेकिंग फिल्म्स। सो विच एवर फिल्म्स वी हैव मेड, even as a producer or now as a director, I have made it because I passionately felt about that story. And when we developed Sia, in fact I wrote Sia's script, and when I wrote it, I felt it is nuanced in such a way that I don't want to give to anybody else to direct it, because I wanted to direct the film in a certain way where I wanted to stick to the emotions of the girl, the victim, and her struggle, and the family struggle to get her to justice. I didn't want to talk more on the rape, I didn't want to talk more on the legal system or any other aspect. So it was a very emotional journey for me, and that's why I decided to direct myself. Why this topic? Because I felt it is very relevant topic. Crime against women are increasing, and various forms of crimes are increasing, and especially talking about rapes. And we have seen the latest NCRB report also, which has come last week. The crime against the rape cases have increased so much. We need to do something about it, and probably this film, this subject will help us to understand the pain of the victim, pain of the family, and we will rise up to become one of the helpers, or one who can contribute back to protect these people and this society. Why I chose this subject, even in spite of knowing because of the commercial viability, I always wanted to start my job as a director with a very strong subject where critical appreciation happens, and wanted to test the waters that whether I can do the tough job. If I can do it, and if I pass this litmus, then probably I'll experiment more in life. और एक बात होता है कि बहुत ऐसा एक्टर की ज़रूरत पड़ता है जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें डायलॉग्स कम है, इमोट करने का चांस ज़्यादा है। तो इसमें आपने एक जिसको लिया है सिया के रूप में, वो भी नई एक्ट्रेस है। तैयारी करने में कितना टाइम आपको देना पड़ा उसके पीछे? हम लकी थे, वी गॉट पूजा, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, हर डेब्यू फिल्म। उसको जब हम नरेट कर रहे थे स्टोरी, एंड शी वॉज इन टू इट, एंड शी इवन क्राइड कपल ऑफ टाइम्स। आई फेल्ट दैट शी वॉज गेटिंग द इमोशंस, एंड शी वॉज गुड एट एक्टिंग। जब हमने उसके ऑडिशंस वगैरह लिया, सो देन वी फेल्ट दैट वी कैन वर्क विथ हर, वर्क टुगेदर. We went together to meet couple of survivors. We went together to meet some of the families, and we could get the feeling, and she could absorb it. And during the process of workshop and working together, we could develop it, and she was into the skin of the character, and she completely surrendered from the point of view of how, whatever we were saying, she was just emoting it. And I feel it all comes up and on the screen, and kudos to her, she was brilliant. और 2014 से आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और ये 2022 है। पहले फिल्म बनाने में 8 साल क्यों लग गए? पिछले किसी भी स्टोरी आपको नहीं लगा कि ये हम खुद बनाएंगे? I always had that creative mind. In all my films as a producer also, I used to select the stories, I used to work with the script, I used to give my own creative inputs, even in editing, or even in creating posters or trailers, etc. Always there was an input from me. But as a producer, you don't have much freedom, because it's director's job to
to get it done. So there is a limit to which you can get into it. But while doing this whole process, I could realize that I can make a film. I can really make. I have not studied filmmaking. I'm just a keen enthusiast who watches films, and also I work professionally somewhere else. So job bhi hai. So you need to balance both, and I felt now last 2 years I felt myself ready that I can do something, and that's why I decided to direct it. और आपका जो फिल्म का जो नाम है और लीड कैरेक्टर का जो किरदार जो निभाया है सिया, और हम फिल्म में देख रहे हैं उसका नाम है सीता। कहीं से भी अगर हम रामायण से देखें तो सीता मैया का भी एक स्ट्रगल था, एक रावण के पास से लौटने के बाद उसको खुद को प्रूव करने में और सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए उसको भी एक स्ट्रगल करना पड़ा। तो यहाँ पर जो हम सिया को देखें, सिया का भी एक स्ट्रगल है, एक बुरी वक्त गुजर जाने के बाद उसका भी स्ट्रगल है। इसी हिसाब से कि सिया नाम रखे अपने सीता। पहले जब हम 4 कहानियों वी वेंट थ्रू 4 केसेस एंड वेंट इन डिटेल एंड देन पुल्ड आउट एंड मेड अ स्टोरी। उसमें से 3 केसेस में लड़की का नाम एस से था, रियल। सो आई ऑलवेज फेल्ट दैट देयर शुड बी समथिंग फ्रॉम एस फॉर द कैरेक्टर एज अ पार्ट ऑफ ट्रिब्यूट टू दोज गर्ल्स, एंड I felt Sia is a small shabd, and because small word and it would be catchy, so we called Sia, and the original name, because in official way her name was Sita Singh, family was calling her Sia. Of course, at the back of my mind, I always felt that Sia is one of the strongest lady I have ever seen as a character, and Sita Maiya, of course, is one of the strongest lady from our mythology and from our history and from our belief system. So I felt there is some correlation, but it is afterthought. It is not forethought. It was always an afterthought. When we did the film, then we thought, okay, that also makes sense. But the reality was, the girl I wanted to name with S, and after a lot of thinking, Sia came into my mind. एंड कोइंसिडेंटली ये फिल्म भी सेट हुआ है यूपी पे, जहाँ पर अयोध्या भी है, मतलब वहाँ पर राम जी भी है, सीता मैया भी है। I shot in UP because UP gives a lot of subsidy in shooting such films. So otherwise, this story can be planted in Bengal, this story can be planted in Rajasthan or Madhya Pradesh, and same incidences can be done. UP has a great character in terms of shooting. I have shot 4 of my films in UP, and they have great environment in terms of shooting. People are very cooperative, people are very good. That's why we shot it in UP, and more important is because we get subsidy. एंड बंगाल में कुछ फिल्म शूट करने का इरादा है? I'm interested to do a Bengali film because I'm very much attracted and intrigued by Calcutta as a city, a long past history and association. So I'm looking for script where I can do a good Bengali film. You are from देवघर ना? Yeah, I'm from देवघर. And बहुत बंगाली देवघर जाते हैं। हाँ. गुरु जी के आश्रम पे जाते हैं। बहुत बंगाली सत्संग में अनुकूल ठाकुर, श्री अनुकूल ठाकुर के वहाँ पर जाते हैं। तो आपका कलकत्ता से रिलेशन कितने दिन का है? मतलब हम बचपन से, हमारा जन्म देवघर में हुआ है, तो जब भी कभी कोई बड़ा शहर, मतलब या तो कलकत्ता या पटना कम जाते थे, कलकत्ता जाते थे क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह भी थे। सो एवरी ईयर ट्वाइस और थ्राइस वी वुड कम टू कैलकाटा। ओके। और जितना भी फिल्म आप आज तक बनाए हैं, तो व्हिच फिल्म वाज द टफेस्ट डिसीजन फॉर यू टू मेक? Sia. Because it was written by me, produced by me, directed by me. So you take a responsibility of so many things, and it's but a very critical subject. Anything can go wrong, and people blame me why you're agenda driven or anything. So I wanted to be very, 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 very precise, very, very, very careful in terms of scripting, in terms of shooting, in terms of my emotions, how it should reflect on the screen. So this is one of my toughest. Of course, as a producer, your job is a little easier than what a director. Of course, there is always a financial risk, but here I had a financial risk, I had a creative risk, I had overall risk. So this is one of my toughest films. और फिल्म में हमको जो देखने मिला कि लाइट का जो यूज़ है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादातर अपने नॉर्मल नेचुरल लाइट में जो शूटिंग हुआ है, और ये लाइट का और एक चीज़ मुझे नज़र में आया है कि जब हम फिल्म का जो पेस, जहाँ ज़्यादातर फिल्म में जहाँ हम देखते हैं कि ज़्यादा पेसी हो जाता है फिल्म, आपके फिल्म में वो जगह स्लो है। ये क्या मतलब ये फिल्म का जो पेस सेटिंग और जो पहले का ये जो गाड़ी का स्पीड हम बोलेंगे कि बहुत जगह में हम देखते हैं कि हड़बड़ी में गाड़ी ज़्यादा जल्दी जा रहा है, ये दिखाया जाता है। आपने वो नहीं किया, आपने एकदम उल्टे रास्ते जाकर आपने ऐसा दिखाया कि गाड़ी स्लो जा रहा है। ये जो अलग करने का जो सोच है, ये क्या ये आप ही का दिमाग में आया? My philosophy of storytelling is, of course, I am inspired by a lot of Iranian cinema, a lot of French cinema,
एंड मुझे ऐसा लगा कि आई नीड टू बिल्ड द कैरेक्टर, आई नीड टू बिल्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर द ऑडियंस, एंड ऑडियंस शुड feel for Sia, and that's why I wanted to be very slow and very kind and gentle while I start my story, to give the character its own natural pace. And then when I know by 15th minute, when audience are with me, they also start getting some jittery that, oh god, it's getting slow, we need to get it done, is where I rush up when the girl is taken away. From there on there is a ride, and by the time we reach to the peak crescendo, you are towards the end of the film. By the accident you are at the peak, and by the time you can get over the accident, the film is over. So it leaves you with a numbness. It doesn't give you any relaxing point after the 15th minute of the film. और एक बहुत अच्छा चीज़ मुझे देखने को नज़र में आया कि ये इतना एक विषय ही ऐसा है, इस विषय में ज़्यादातर लोग को वल्गर कुछ दिखाते हैं, आपने वो नहीं किया, और ऐसा भी कुछ डायलॉग भी आपने नहीं वो यूज़ किया जहाँ पर कुछ एब्यूजिव कुछ। वी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट, मैंने जब स्क्रिप्ट लिखी थी तभी मैंने कहा मुझे साला शब्द भी नहीं बोलना है. आई डोंट वांट टू यूज़ एनी कस वर्ड, आई डोंट वांट टू शो एनीथिंग विच इज़ वल्गर. I can see this film with my son and daughter, who are like, my daughter is 20 years old, my son is 14, and bravely show it to all other daughters, because it's a very important film for them. They need to also bear the strength, they need to be very careful. All the boys, all the men, all the policemen. So हमने ये बहुत clarity रखी थी कि पुलिस को भी एक ढंग से चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर रहे हैं. And even we didn't want to show politicians in the bad. Anybody who has power, gets in mind, can do this thing. So I wanted to do a very balanced approach so everybody in the society accepts it, that this is reality and that we are ready to change, because acceptance is the first step to change. That's why I used very simple language, very clean, clear language. Even I have not used the word rape in the film. Yeah. When saying rape, we said गलत काम. ये rape use सिर्फ हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर के मुंह पे और किसी के मुंह पे. और that's how news reporters say. Yeah. That's how news reporters. और ये जो यूपी का एक एमएलए का इसमें It's just because I had to put the film in UP. For the same case is there in Rajasthan where the powerful MP did this. और जैसे सोशल मीडिया पे चलता है ना, हर किसी फिल्म को बॉयकॉट करो, ये बॉयकॉट का एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे. तो ये फिल्म को लेकर आपका ऐसा कुछ एक्सपेक्ट, अगर ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि बहुत सारे फिल्म को लेकर फिल्म का जो कंटेंट है, कंटेंट बिना देख कर ही लोग बॉयकॉट चला देते हैं, तो इसमें आपका क्या राय है? मुझे पूरा भरोसा है कि ये एक टेम्पररी फेज़ है, जो कि आई सी दिस एज ए alarm bell for filmmakers in Hindi films, that they should go back to the drawing board and work on the content and the craft and come back and tell stories which audience cannot neglect or reject. So it's just a way the audience are saying to us that please give us good content, that because we are exposed to international cinema, international stuff, they now know that what we are showing in Hindi film is not that class, not that quality. So I feel as long as we make content driven cinema with good storyline, whether it is entertainment, whether it is infotainment, whether it is real life incidents or whatever, it should be made with pure zeal and prudency and righteousness, so that honesty reflects, and that's where this boycott and all will go away, because at the end of the day cinema is a part of the life of people, and we cannot ignore it, we cannot rub it off. But what they want is good film without hurting sentiments. I think it's high time we should also respect the sentiments rather than use them to flare ideas. और पहली फिल्म में आपने ये बेंचमार्क सेट कर दिया खुद के लिए, तो दूसरा फिल्म आपका हम कब देख पाएंगे? मतलब फिल्म या कुछ वेब सीरीज हम देख पाएंगे? नहीं, वेब सीरीज तो नहीं. I have written a film. I've already finalized. I'm shooting in December, January. वो भी क्या उस साइड पे शूटिंग होगा, यूपी पे या दूसरी जगह? That I'm shooting in Rajasthan, because Rajasthan has also declared subsidy now. तो आपका मानना है कि बंगाल गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देगा तो इधर भी आके शूट, because we are small filmmakers, we look for those subsidies. It helps. एंड बंगाल से आपका फिल्म का कलेक्शन भी हो चुका है कि रिसेंटली आपने एक फिल्म बनाया है आधार, वो भी सुमन घोष का जो फिल्म दादा का यार, हमने देवघर में शूट किया उसको, बट हमने एक फिल्म बनाई राम प्रसाद की तेरी से, बहुत बढ़िया फिल्म है. या ही इज देयर, नहीं इवन परमभद्र, व्हाट्स हिज नेम? परमभद्र, ही इज द मेन लीड. सो देयर इवन कोनकोना सेन वाज आल्सो देयर. बंगाल का एक्टर आपसे काम किए हैं, तो शुमंदा भी काम किए, तो ये आधार फिल्म रिलीज होने के कुछ दिन पहले विड्रॉ कर दिया गया. वो हमारे पार्टनर जियो का डिसीजन है. ये क्या फिल्म हॉल पे आएगा या एकदम? वी आर वेरी होपफुल कि आना चाहिए.
कल फिल्म तो रेडी है. बिकॉज हम सारी फिल्म थिएटर में लाते हैं, छोटी हो या बड़ी. Even in this difficult situation, we decide to bring CR to the theatres is because we believe a film has a right place at theatres, and of course, then they can always go to the OTT and other sites. My last question, audience से क्या expect करते हैं शेयर? I just want more people should see this film, feel the film, keep it with them, and think what we can do as a part of society. Thank you. Thank you Thank so you, much. Manish. Thank you It's so much. nice meeting you. Nice meeting you, and thank you for watching the film.